This is our second day of trip in Skardu, and we left our cottage in Shangri-La at around 10 am to visit Deosai National Park. I have divided today's travel in two vlogs to shorten the videos. In this vlog, we will visit Satpara Lake and Satpara village, while the next vlog will be on Deosai National Park. दोस्तों, हम अभी रवा दवा है सतपारा लेक की तरफ। सतपारा गांव भी है और ये मशहूर है जो अली सतपारा के नाम से ना, उनका गांव है। Indus River is known very violent in this region, but this is its innocent face. After 15 minutes drive from Shangri-La village, we reached Kimba Bazaar. The visitors can get the accommodations here against low cost as compared to Shangri-La, where residence is not affordable for middle class. Now we are passing through this Skardu city. The roads are under construction here. Every house has around 2 Japanese Prados each, as the vehicles running here are mostly non-custom. A road from Skardu Bazaar turns to Satpara Lake. Although this place is at the height of around 8 to 10,000 feet above the sea level, but the weather is so hot here and the temperature is around 33 degrees Celsius. ये रास्ते बड़े एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे गर्मी बड़ी शदीद है। जो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे बड़ी ठंड होगी, लेकिन गर्मी स्कर्दू में बहुत है। तो ये ऊपर जाके अभी ठंड है शदीद। अभी हमने पीछे एक चौक छोड़ा है, बड़ा उसका फनी नेम है परेशान चौक। तो ये परेशान चौक क्यों नाम है उनका? तो परेशान चौक है, जितने लोग सुना है कि परेशान होते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं। The weather gets hotter as the sunlight reflects these barren mountains, but when the rain falls here, the weather turns immediately into extreme cold. That's why the visitors should also keep the warm dresses with them during travel. These barren mountains are full of minerals and precious stones. Satpara Lake is a natural lake which is around 9 km away from Skardu city. The lake is situated at an elevation of 2636 meters above sea level and is spread over an area of 2.5 kilometers. The melting ice of Deosai Plains are main source of water of the lake. That is the beautiful Satpara Lake in front of our eyes. Dark green in color with some blue shades, surrounded by brown naked mountains. A cluster of trees in its center, and with sun gone somewhere out of sight. Discover the green, blue, white, brown, and millions of other colors of this Sohni Dharti and let your souls sail the divine rhythm of nature. अस्सलाम वालेकुम। हम अभी मौजूद हैं सतपारा लेक पे।
तो ये डैम है सतपारा, बहुत बड़ा। ये बर्फ़ से जो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी ऊपर पहाड़ों से आता है वो सारे का सारा है। तो ये काफ़ी बड़ी झील है और शफाफ है बिल्कुल। आप देख सकते हैं नीचे पत्थर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। आप देखें अल्लाह ताला की नज़ारे हैं ये खूबसूरत, सुभान अल्लाह। कि कोई ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो देखते जाएं और सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जिस इंसान ने वक्त नहीं ना निकाला नेचर के लिए और वो दुनिया की हसल बसल में मसरूफ़ रहा ज़िंदगी की, तो उसने रियली कुछ नहीं कमाया। उसने सिर्फ वो पैसे जोड़े हैं और बस। It touched our souls and gave us a soothing effect to calm down our tired bodies. At around 20-minute drive next to the lake, small beautiful Satpara village is located surrounded by high mountains and green beautiful valley. The famous mountaineer Ali Satpara belonged to this small village. School-going girls of Satpara village can be seen here in a traditional style. नन्हे मुन्ने बच्चे देखें ये देखें, ये गाड़ी की भी बहादुरी है हमारे साथ साथ। Due to shortage of time, we are not staying at the village and continue our travel to the Osai National Park, where the beautiful sights are waiting us. Slowly and steady, we move toward the Osai from the village to explore the area. Friends, remain with us in the next vlog to view the Osai National Park. Till that, Khuda Hafiz.